Good morning, children. Again we come to study maths here. So are you ready? So open the book and look here. Pay attention. So you open this chapter number 1, exercise 1.2. You will find this on page number 14. Page number 14. This you will find on page number 14. Some questions we have already finished. We come to the G1. G. Question number G. Compare each pair of numbers. I am writing here on the board also. Compare each pair of numbers. This one is G. ये G वाला है. क्वेश्चन नंबर G है ना. कंपेयर ईच पेयर ऑफ नंबर्स. पुट साइन. ये वाला साइन लगाइए, ये वाला लगाइए और इक्वल टू का साइन लगाइए. समझ में आ रहा? और डैश साइन इन सर्कल. यहाँ पे सर्कल बने हुए हैं आपकी येलो बुक के अंदर. उस सर्कल में अपने को तीनों में से एक साइन लगा. वी हैव टू पुट एनी वन साइन. तो ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा हो साइन लगा दिया अपन, है ना. अपन पहले जज करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है या बराबर है, उस हिसाब से अपन साइन लगाएंगे. ठीक है ना. तो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन आल्सो हियर. दिस नंबर 965. फर्स्ट वन इज 965 43219 43219 965 43219 comma and comma. Then circle. There is a circle here. This is the circle. Okay. And 9689. Again 9689 219 comma 219. ठीक है. ये डिजिट है आपका फर्स्ट सम. अब इसको कंपेयर करना अपने को कि विच नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू. फर्स्ट वी काउंट द डिजिट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स आर देयर. हियर 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स आर देयर. डिजिट काउंट करते ही पता पड़ जाता है कौन सा बड़ा है. जिसमें ज्यादा डिजिट होगी वो बड़ी होगी. ठीक है ना. और सेकंड थिंग ये फाइंड ध्यान रखना, अगर कोई ज्यादा डिजिट वाली है और उस पे आगे माइनस साइन लगा हुआ है तो वो स्मॉलर हो जाएगी, है ना. ये बोथ आर पॉजिटिव. देन यू कैन काउंट द डिजिट. You can count this way also. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. This is 9 crore, 65 lakh, 43,219. Here again ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. So this is only lakh. Here 9 is crore. Crore is more than lakh. So this one is greater. So which sign you will put from these three signs? So I will put here this sign because this one is greater. जिधर जो संख्या बड़ी होती है उधर इसका साइन मुंह खुल जाना चाहिए. ठीक है. ये हो गया आपका फर्स्ट सम. नाउ वी कम टू द सेकंड वन. दूसरा भी देख लीजिए आप.
सेकंड में क्या है 143,72 143,72 और 000 1 2 और 3 then 145 72 000 1 2 and 3 0 14572 and 000. Now I will put the circle here. This is the circle. How many number digits are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 3 6 7 8. Both the digits are equal. अब चक्का चालू होता है यहाँ से, है ना, दोनों इक्वल है। यहाँ पे ये बड़ी थी, ज्यादा डिजिट थे। अब यहाँ पे अपन देखेंगे फर्स्ट डिजिट इज विच वन इज ग्रेटर, तो बोथ आर इक्वल। सेकंड डिजिट हियर 4, देयर आल्सो 4, हियर थर्ड डिजिट 3 इज देयर, हियर 5 इज देयर, सो 3 इज ग्रेटर और 5 इज ग्रेटर, 5 इज ग्रेटर, देयरफॉर दिस नंबर इज ग्रेटर। अंडरस्टैंड? आगे से देखेंगे कौन सी बड़ी है, ऐसा नहीं है कि ना यहाँ पे 72 यहाँ पे भी 72 है। अब यहाँ क्या है 5 ग्रेटर 3 से, तो यह नंबर क्या है ग्रेटर है, तो इसको अपन कौन सा साइन लगाएंगे, इस तरफ मुंडा बोल देंगे इसको, दिस साइन आई विल पुट दिस, समझ आ रहा? दिस नंबर इज ग्रेटर। Now again we come to the third question, third one. देखिए 837 54168 54168 3 के बाद कॉमा उसके बाद रेड है ना 83745 83745 168 you put comma here. Again I am making the circle here. अब आप देखिए, हाँ 1 2 3 means ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. Here again ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore, both are equal, crore. So first digit are both are same, second digit 3 is also same, 7 is also same, 5 is also no. After 7 here is 4, here it is 5, there is a difference here. यहाँ पे आपको अंतर दिख रहा होगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 4 है, फोर्थ नंबर डिजिट है ना। Which one is greater now? So 5, this one is greater, so I will put this type of sign here. Okay, एक सम और है, फिर भी कर देता हूँ, चलो आपको नहीं तो आपके दिमाग में लगा एक सम में छोड़ दिया था, ये लीजिए वन मोर सम 15000 150,009 this again 150 109, ठीक है, ये डिजिट ये नंबर है। आई एम मेकिंग द सर्कल हियर।
This is the circle. अब देखिए आप, how many digits are there? Ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. Ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. Both are equal. Crore, crore. So second digit is 5, 50. Here is 50, then 00. You see at the last, this 100 position, there is 1 here, and here it is 0. Here is 0 and here is 1. Which one is greater? 1 and 9 means that is greater. So you put this type of sign here at the last. 1500 109 means 1 crore 50 lakh 109 is greater. So you note down this. I am coming just in 10 seconds. Note down fast. Começa a coisa. I think you have written this. क्लियर आप लोगों ने? चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. We come to the next question here. Make the smallest and the greatest number using the given digit. Do not repeat any digit. ये डिजिट्स आपको दे रखे हैं, इससे अपने को स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और इसमें साथ में ध्यान रखना है जीरो भी है बीच में और आपको नंबर रिपीट नहीं करने हैं. We don't have to repeat the digits. So you see this question number H. Make the smallest and the greatest digits. Make the smallest and the greatest number. And the greatest number. Make the smallest and the greatest number. By which digit? I am writing here digit. One 1830 275 and put the commas after each digit. 3, 6, 7 digits are there. How many? 3, 6, 7 digits are there. Then how will you make the smallest and the greatest? So 13830 275. We have to make the smallest number from this digit. So first I am making the smallest number. So write down solution. The smallest number is equal to. The smallest number is equal to. How will you make the smallest number? First you have to write down the
smaller number, you will what you will say? The smaller number is 0, sir. But if you write 0 in the front, then it will be not counted in the number. Suppose I have written here 9 this way. So it is read as 9 only. If I will write 0 at the back, then it is known as the 90. Understand? If you write 0 in front, it is not counted. Suppose I have written here 231 and I have put 0 here. It means 231 is there. 0 will not count in the digit here. Okay. So this you have to keep in mind. If there is 0 in the digits. So what you will do, the smallest number. So you don't write 0 in the front. First you write the other smaller number. Next then 0. It is 1. So you write down here 1 here. Then we will write 0. Then we can write 0. After the 1, which is the greater than 1, then it is 2. After that 3. Then 2 and then 3. And after this 3, which is greater number here? 5. Then 7 and 8. 5, then 7 and then 8. How many digits are there? 3, 4, 5, 6, 7 digits. So you count this here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digits we have completed. So this is the smallest number. You understand? How to make the smallest number? Now I am making the greatest number. The greatest number is equal to greatest number also we have to make with these digits only. So you make this in the decreasing order. But here it is 10. This you have to keep in mind. First you write the greatest number. Greatest number here is 8. After the smaller than 8, it is 7. So write down here 8, then 7, then 5, then 3, then 2 this way. 8, then 7. Smaller than 7 is 5. Then 3, then 2. After that 1 and then 0. Don't write 0, 1. Greatest number no, it is 10. आप इसको देखकर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना कि आप 0 आएगा उसके बाद 1 आएगा. जब अपन ग्रेटेस्ट लिखेंगे तो अब 1 0 हो जाएगा पीछे. 10 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है? 10. तो बड़ा ग्रेटेस्ट में लिखना है तो 1 0 होगा. ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है. ये दो चीज मैंने ग्रेटेस्ट और द स्मॉलेस्ट नंबर आया शोड ऑन यू ऑन द बोर्ड हियर. So I think you understand these both the things. The greatest and the smallest number made by the digits. Copy down this. Now we will change the digit. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं हम. देखिए आप ध्यान से कैसे करते हैं क्वेश्चन 2 को. 2 में क्या है? 046781. 046781. हाँ? और 5. ये डिजिट है. अब इससे अपन जो है ये दोनों डिजिट को स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वापस से बनाएंगे. आई एम रबिंग इट. तो इन सॉल्यूशन द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम दिस नंबर वी विल मेक. सो अगेन इट इज 0 हियर.
but we will write one first. One. What do you write here? One लिख देंगे यहाँ पर जैसे. After one, which is the small number 0. Then greater than 0 is 5. Then greater than 0 is then 4. Then 5. Then 4. Then 5. After that 6. Then 7 and 8. 6. Then 7 and 8. So this way 3, 0, 6, 7 digits are there. 3, 0, 6, 7 digits are there. So how will you read this? 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Means 10 lakh 45,678. So this is the smallest number. Now you have to make the greatest number from this digit only. So again you write down 8765. 8, 7, 6, 5, 4 and 1, 0. You don't write 0 and 1. Otherwise 0 and 1 is the smaller than 10. So I put commas. So these are the two numbers which we have got, the greatest number and the smallest number. These two numbers we have got. 87,65,410 is the greatest number. I think you understand this sum, both of them. You note down this fast. So last question I am doing here, I am changing the digits here. Set last question is this 31,519,3824. This is the third one. You put the commas after each digit. The smallest number you should make. Here there is no 0 here. So first the smaller number is 1, then 2, then 3 and 4. 1, then 2, then 3 and then 4. 1, 2, 3 and 4. Then 5. After that 8 and 9. 5, 8 and 9. Now count it from how many digits are there? 1, 3, 4, 5, 6, 7 digits. Here 3, 6, 7 digits. Now you put the commas. Okay. So this is the smallest number. Now we come to the greatest number. So you write down this in decreasing order. First you write down here 9, then 8. Then 5, then 4, then 3, then 2 and 1. So this is the greatest number. So 3 sums I have done for you. 1 I am giving for homework. You try at home. Okay, I think you understand this much. So I will not teach more. I am closing my lecture here only. I will come back soon to teach you maths again. Till then, be happy.